हेलो। आप लिंक एक दफ़ा ना अपना आपका जो वो ग्रुप है उसमें आप ये शेयर करिए। मुझे यहाँ अभी कम ही पार्टिसिपेंट्स दिख रहे हैं। देखिए, परसों जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने ये डेंस सेट्स के बारे में सीखा था। ठीक, हमने देखी वो आप ना एक सेट को डेंस कब कह सकते हैं। ठीक, इसके लिए हमने देखा दैट द रिक्वायरमेंट इज दिस: क्लोजर हैज टू बी x where x is the underlying set of your space। फिर हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस इसमें ना फिर देखी। वहां पर हमने देखा कि दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू डेंस सेट्स, इट नीड नॉट बी अ डेंस सेट। ठीक है। और ये भी if A is a dense set and if B is a superset of A, then this B is also dense. That means supersets of dense sets are also dense। ये चीजें हमने देखी, इसको हमने यहाँ रिकॉर्ड किया था। फिर उसके बाद हमने देखी थी definition of a nowhere dense set। For a set to be nowhere dense, the requirement is that the interior of its closure has to be empty। ठीक, फिर इसकी कुछ एग्जांपल्स हमने देखी थी। ठीक, और यहाँ मैंने अगर आपको याद होगा, मैंने आपको ये इसके बारे में ना वो इसका पूरा स्केच दिया था that every finite set in R with usual metric is nowhere dense। ठीक है ना। इसके बाद हमने यहाँ एक और चीज भी देखी थी, जो Z है it is also nowhere dense। और Q जो है it's dense। और अगर आप देखेंगे Z और Q की कार्डिनलिटी सेम है। ठीक, तो कार्डिनलिटी से आप कोई चीज डिसाइड नहीं कर सकते। ये मैंने परसों आपसे कहा था, ये डिटेल में तब डिस्कस किया था। फिर हमने ये भी देखा था कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नोवेयर डेंस सेट इज ऑलवेज डेंस। अगर आप कोई नोवेयर डेंस सेट लेते हैं, उसका जो कॉम्प्लीमेंट है इट्स ऑलवेज डेंस। हाउएवर कन्वर्स इज नॉट ट्रू। दैट मींस इफ यू स्टार्ट विद अ डेंस सेट, द कॉम्प्लीमेंट नीड नॉट बी नोवेयर डेंस। क्योंकि Q और Q कॉम्प्लीमेंट they are both dense। ठीक, so converse is need not be true। फिर हमने देखे थे what are first category sets। A set in a metric space XD, a set A is said to be a first category set if it can be written as a countable union of nowhere dense sets। और इसकी फिर कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दी थी। N, the set of natural numbers, is
nowhere dense because it can be written as countable union of singletons. Same is the case with Q. क्योंकि Q भी डिनोमिनेबल है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं. In fact, every countable subset of R is of first category. ठीक? Then we saw what are second category sets. A subset in a metric space is said to be second category if it is not of first category. Then we saw what are Baire spaces. A metric space Xt is said to be a Baire space if and only if every non-empty open set in Xt is of second category. ठीक है, अब हम इसको आज फर्दर परस्यू करेंगे इन्हीं चीजों को. और जो टॉपिक होगा हमारा इट विल बी अबाउट दिस Baire spaces and Baire's category theorem. पहले हम कुछ ना यहाँ भी कुछ ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करेंगे. वी नो दैट ये हमें पता है complement of a dense set need not be dense or need not be nowhere dense. ये अभी हमने देखा. Need not be nowhere dense. However, complement of an open and dense set is always nowhere dense. ठीक है. अगर आप खाली डेंस लेते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट नोवेयर डेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. लेकिन if your set is open and dense then its complement is always nowhere dense. इसको हम देखेंगे कैसे. For if E is open and dense in Xt, then interior of E complement closure. In the first place, this is same as interior of what? Chunki E is open, so E complement will be closed. So and closure of a closed set is the closed set itself. So therefore, it is same as E complement closure is same as E complement because E complement is already closed. ठीक है ना. और ये जो है this is empty. आप बता सकते हैं कैसे. Why this interior of E complement is empty.
because E is also dense. देखिए इसका रीजन असल में कैसे है, ये कैसे आता है. Actually, it's related to something else. मैं पहले आपको वही बताऊंगा. Let XD be a metric space and E be dense in XD. Full stop. If capital O be a non-empty open set in XD, then basically ये होता है. If E is dense and O is non-empty and open, ठीक? Then E intersected with O, this is always non-empty. ऐसा क्यों? For if this is not the case, then तो फिर क्या होगा? Then this will be empty. Then E intersected with O will be empty. And therefore, अगर आप इनकी पिक्चर ड्रा करेंगे, अगर आप ऐसे कह रहे हैं their intersection is empty, that means they have nothing in common, so they are distant. So E ऐसे होगा और O इस तरह का होगा. और clearly अगर आप देखेंगे O is contained in E complement या E complement is contained in O, एक ही बात है. Therefore, O is contained in E complement and consequently जो O closure है, क्योंकि closure is monotone, A contained in B implies A closure is contained in B closure. So यहाँ क्या होगा? O closure will be contained in E complement closure. Sorry. गलत लिख रहा हूँ. हम इसको ऐसे परस्यू करेंगे क्योंकि यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा मुझे. हम इसको ऐसे करेंगे. E intersected with O is empty, so that means O, it must be contained. O को लेंगे या we'll take E because E के closure के बारे में हमें पता है. That it. तो ये मिलेगा. Therefore E is contained in O complement. ठीक है ना? ये ज़्यादा बेहतर है. वो पिक्चर से आप easily देख सकते हैं. Consequently, E closure will be contained in O complement closure. So E closure will be contained in O complement closure.
Now this O is open, so O complement is closed. ठीक, so this is already closed O complement, तो इस पर closure से कुछ नहीं होगा, so therefore it will be invariant under this, so it will be same as O complement. And what about E closure? क्योंकि आप मान रहे हो ऊपर that this E is what? E कोई ordinary set नहीं है, it's dense, so E closure is X. So आपको ये मिलेगा X is equal to E closure, and E closure is contained in O complement. That means X is contained in O complement, and O complement is already contained in X, and so therefore they are equal. Hence X is equal to O complement. ठीक है, तो ये बराबर है एक्चुअली, और अगर X O complement है तो दैट, या अगर ऐसे कहेंगे आप O complement is X, what must be O then? Thus अगर O का complement पूरा X है, so that means O has to be empty, and this is a contradiction. Why? Because आपने ऊपर यहाँ assume किया था that O is what? हमने assume किया था O is non-empty, so we get a contradiction. So that means going against star, अगर आप इसके against जाता है, you get a contradiction. So star has to be true. Star has to be true means E intersected with O is always non-empty. और इसकी समरी ये है, अगर आप यहाँ इस पूरे डिस्कशन में देखेंगे, व्हाट्स ई एक डेंस सेट है, एंड व्हाट्स ओ एक नॉन एम्प्टी ओपन सेट है, और नीचे आप देख रहे हैं इंटरसेक्शन इज नॉन एम्प्टी, तो इसका मतलब ये है कि अ डेंस सेट इंटरसेक्ट्स एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट. दैट मीन्स इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, a dense set has a non-empty intersection with every non-empty open set. इसी को आप लिखिए एज अ रिमार्क. इसे अब हम फॉर्मली रिकॉर्ड करिए. डेंस सेट has a non-empty intersection with every non-empty open set. That means it intersects every non-empty open set. That is, a dense set intersects every non-empty open set. ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे. So that means if a set fails to intersect some non-empty open set, वो set फिर dense नहीं हो सकता. ठीक है, क्योंकि dense sets they intersect every non-empty open set. That means have a non-empty intersection. What's remarkable वो ये है कि the converse is also true. मतलब if a set intersects every non-empty open set, then the set has to be dense. इसको भी हम नोट करेंगे. अब as separate observation record करिए. Let XD be a metric space and E be a subset of X. Full stop. If this E intersects that means when I say intersects, it means has a non-empty intersection.
intersection. E intersects every non-empty open set then this E must be dense in XD. इसकी मैं justification आपको अब दे रहा हूँ. To see this, let x in capital X be arbitrary. Then ये मैं आपसे पूछूंगा क्यों. For each n in the set of natural numbers, E intersected with S x 1 by n, this must be non-empty. बताइए क्यों. S x 1 by n is open set. It is open and non-empty. ये open sphere है. Open spheres are open and non-empty. यही plain reason है, because open, because देखना सही. अब ऐसे इसके नीचे ना ये लिखिए कि that this is open and non-empty. और ऊपर आपकी assumption है कि that E intersects every open and non-empty set. So this intersection must be non-empty. ठीक है. Full stop. अब इसके बाद pick x sub n in, चूंकि ये इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है तो वहां से आप अब एक पॉइंट पिक कर सकते हैं, और जो पॉइंट हम पिक करेंगे यहाँ से उसको हम कहेंगे x sub n. मैं वही लिखने जा रहा हूँ. पिक x sub n in E intersected with S x 1 by n. ठीक. For n equal to 1 2 3 so on. क्योंकि आपने पहले ही ऑलरेडी कहा कि फॉर ईच n दिस इज नॉन एम्प्टी, तो ये आप कर सकते हैं फॉर एवरी n running from 1 to so on. ठीक. So in this way we get what? We get a sequence. कहाँ पर? In, अगर आप देखेंगे x ends वो intersection से आ रहा है, और intersection में E भी है, so they are coming from E also. So in this way we get a sequence in sequence, और वो sequence क्या मिल रही है यहाँ पर उसको भी हम mention करेंगे. We get a sequence this x sub n running from 1 to infinity in कहाँ? In capital E, such that चूंकि ये x ends यहाँ से भी आ रहा है, और यहाँ से आने का मतलब ये है distance between x sub n and the center of this open sphere, it must be less than the radius. Radius is 1 by n, और 1 by n को क्या होता है as n goes to infinity? It goes to 0 as n goes to infinity. So that means distance between xn, the nth term of this sequence, and x, it's going to 0 as n goes to infinity. इसका मतलब क्या है? That is, xn's are convergent to x, and therefore, so x becomes what? X becomes the limit of what? Limit of xn's. What's xn's? It's a sequence in E, so x becomes the limit of a convergent sequence in E, so x must be a closure point. Therefore, x must be in E closure. But x कहाँ से आपने लिया था? Little x हमने लिया था from capital X and was chosen arbitrarily. So that means every point of capital X is in E closure. So that means capital X is a subset of E closure. Since little x in capital X was chosen arbitrarily, it follows X is contained in E closure, and E closure is already contained in X.
therefore they are equal. E closure is same as X, so thus E is dense. Okay? So this has been established. If a subset of X intersects every non-empty open set in XD, then the subset E must be dense in XD. ठीक? और ये इस ऑब्जर्वेशन का कन्वर्स है. A dense set has a non-empty intersection with every non-empty open set. So that means यहाँ से आपको ना एक characterization मिल रही है फिर dense sets की. इसे आप as theorem रिकॉर्ड करेंगे. इस थियरम का जो प्रूफ है उसकी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी आपको दी है, तो आप बस यहाँ आप कोई पीसेस असेंबल करना है एंड विल गेट द प्रूफ. हम अब ये कह सकते हैं that XD be a metric space and E be a subset of X, then this E is dense in XD if and only if and only if E has a non-empty intersection with every non-empty open set in XD. If it has a non-empty intersection with every non-empty open set in XD, then this E is dense. And conversely, और ये दोनों चीजें मैंने ऊपर आपको दिखाई. अब आप ये वाली चीज जो हमने यहाँ से जाना, ये हमें जो हम इनिशियली करना चाहते थे, मैं आपको दिखाना चाहता था कि इफ यू टेक अ ओपन एंड डेंस सेट, इसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है इट्स नोवेयर डेंस. अब हम उसे एड्रेस कर सकते हैं. मेरे पास और टूल्स आ गए. आपको E के बारे में क्या पता है? E इज डेंस. ठीक. और मेरा क्लेम है यहाँ पर कि दिस इज empty. Now, if possible, suppose E is open and dense, जैसा कि हम वहां ले रहे थे, and interior of E complement is non-empty. मैं आपको दिखाऊंगा बेसिकली ये पॉसिबल नहीं है, सो वी मस्ट गेट अ कंट्रडिक्शन. अगर ये नॉन एम्प्टी है, सो दिस देन बिकम्स अ नॉन एम्प्टी ओपन सेट बिकॉज इंटीरियर इज ओपन. इंटीरियर ऑफ अ सेट इज ऑलवेज ओपन, सो दिस इज ओपन सेट. और आप कह रहे हैं ये नॉन एम्प्टी है, सो दिस देन बिकम्स अ नॉन एम्प्टी ओपन सेट. और अभी आपने देखा अ डेंस सेट इंटरसेक्ट्स एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट. तो फिर क्या होना चाहिए? सिंस E is dense, तो ये होना चाहिए E intersected with interior of E complement, it has to be non-empty. But क्या ये possible है? Is it possible? When you say interior of E complement, it means part of E complement, है ना? Interior, इसके अंदर है. This is actually the set of interior parts of E complement, right? Interior of a set is a subset of that set. So this is subset of E complement. तो आप कह रहे हैं कि E intersects a subset of E complement. ये possible नहीं है. Because which is a contradiction. And contradiction means ये non-empty नहीं हो सकता. So this has to be empty.
this has to be empty means interior of E complement closure is phi. So that means E complement is nowhere dense. So अब आप हमेशा के लिए याद रखेंगे complement of a dense set need not be nowhere dense. However, complement of open and dense is always nowhere dense. Complement of an open and dense set is always nowhere dense. ठीक. अब इसके बाद एक और रिजल्ट आप नोट करिए, ये काफी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, छोटा सा रिजल्ट है लेकिन इसकी अपनी एक रेलेवेंस है. स्टेटमेंट ये लेट xt be a metric space and E be a dense set in xt full stop if E1 is open and dense in xt, then E intersected with E1 this या उसी लाइन में लिखिए E intersected with E1 is also dense in xt. देखिए हमें पता है कि in general intersection of two dense sets need not be dense because Q intersected with Q complement, they are both dense but their intersection is empty. So intersection of two dense sets need not be dense. However, if one of them is open, then the intersection is also dense. यही ये theorem हमें कह रही है. अब देखिए this geometric space E dense है और जो दूसरा set इस intersection में आप देख रहे हैं E1, उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि this is open and dense. The intersection of two dense sets, it can be dense, but one of the sets has to be open. उन दो में से अगर एक open है, then intersection is also dense. अब देखिए हम इसको प्रूव कैसे करेंगे. तो सबसे पहले आप क्या करिए, let capital O be an arbitrarily chosen non-empty open set in xt. Click. So capital O is what? It's an arbitrarily chosen non-empty open set. Full stop. Then अब इसे देखिए, E intersected with E1 intersected with O. Basically आप इसको ऐसे लिखिए, E intersected with E1 intersected with O. ठीक. This is equal क्योंकि we know that this जो intersection operation है, it is associative. So आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. This is E intersection with
intersected with E1 intersected with O. अब ध्यान से सुनिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ. ये जो सेट आप यहाँ देख रहे हैं ना इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इसके बारे में मैं आपसे कह रहा हूँ दैट इट इज नॉन एम्पटी एंड ओपन. मुझे बताइए क्यों. E1 डेंस है. E1 डेंस है, O नॉन एम्पटी है, तो इनका इंटरसेक्शन नॉन एम्पटी होगा. सो नॉन एम्पटी तो हो गया. अब ओपन कैसे है? बिकॉज E1 ओपन भी है ना. यहाँ आप देखिए E1 की ओपननेस यूज हो रही है. E1 is also open. O is also open and intersection of two open sets is an open set. So this is non-empty and open. ठीक. So therefore this is E intersected with what? A non-empty and open set. E is dense. So this intersection has to be what? It has to be Not equal to 5. non-empty. ठीक. तो आप क्या देख रहे हैं? अगर आपसे समराइज करेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूं. This intersects O. What's O? O is an arbitrarily chosen non-empty open set. So that means this intersection, ये जो subset है, it intersects every non-empty open set in XT. So अभी जो आपने theorem देखी, by that theorem, this has to be dense because we know that if a set intersects every non-empty open set, then the set has to be dense. इसी को हम summarize करेंगे. Thus, E intersected with E1 has a non-empty intersection with, क्योंकि O arbitrarily हमने select किया था, so it will be true for then. If it is true for this O, it must the intersection is non-empty for this O. It must be non-empty for every O. और मैं वही लिख रहा हूँ as a non-empty intersection with every non-empty open set in XD. And therefore E intersected with E1 is dense in XD. So अगर दो में से एक open है, then the intersection is dense. ठीक. But in general, intersection need not be dense. आपको कुछ additional information चाहिए तब आप denseness claim कर सकते हैं. और वो additional information ये है. One of the sets has to be open also. ठीक है. तो अगर दो में से एक open है, then intersection of two dense sets is dense. अब अगर अब दोनों open होंगे, तब भी यही होगा ना फिर. इसको आप as a corollary रिकॉर्ड करिए. Let XT be a metric space and E1, E2 be to open and dense sets in XD, then E1 intersected with E2 is open and dense. देखिए यह आपकी जो assumption है ना, यहाँ पर you have a stronger assumption. अगर आप अभी वाली theorem और ये corollary को
कंपेयर करेंगे ना इनकी assumptions को, यहाँ we have a stronger assumption. अभी theorem में आपने कहा था one of them is open, यहाँ आप कह रहे हैं कि both are open. That is the reason you are getting a stronger conclusion. वहाँ conclusion में था intersection is only dense, यहाँ conclusion में है intersection is open as well as dense. ये समझ आता है हमें कि ये stronger conclusion क्यों मिल रही है, because हमारी assumption भी stronger है यहाँ पर. Denseness तो वही theorem से ही आएगी, क्योंकि वहाँ दो में से बस एक का ओपन होना काफी है, यहाँ तो दोनों ओपन है. सो दैट थियरम इज एप्लीकेबल. सो बाय दैट थियरम, बाय दिस थियरम, अबो थियरम, मतलब बाय दिस थियरम, even intersection E2 is dense. और चूंकि this is intersection of two open sets and intersection of two open sets is open, so therefore it is open as well as dense. ठीक है. So ये तो था case of two open and dense sets. Now what about three open and dense sets? Suppose you have three open and dense sets. Suppose E1, E2 and E3 are open and dense. Then what about this? What about E1 intersected with E2 intersected with E3? हम पहले इसको ऐसे देख सकते हैं. I can write this as E1 intersected with E2 intersected with E3. ठीक. Now E1 intersected with E2 by the above corollary, this is open and dense, because E1 and E2 are open and dense. So this set appearing in the square bracket is open and dense. अब फिर से आप वही corollary का इस्तेमाल करेंगे. ये जो set आप यहाँ देख रहे हैं square bracket में, it is open and dense. E3 is also open and dense. So this set will be open and dense. So इस तरह से आप तीन के केस में भी कह सकते हैं कि that intersection of three open and dense sets is open and dense. इसी तरह से अगर आपके पास चार open and dense sets है, तो वहां भी तो इंडक्टिवली आप कह सकते हैं कि that finite intersection of open and dense sets is open and dense. इसे आप लिखिए एज अ रिमार्क. ये बेसिकली आपको इंडक्टिवली मिलेगा. यू हैव टू यूज मैथमेटिकल इंडक्शन एंड और आपको ये मिलेगा. In a metric space, finite intersection of open and dense sets is open and dense. ठीक है. जैसे अभी मैंने किया ना 3, वैसे या 4, और इसको आप फिर इंडक्शन की मदद से, मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से आप कर सकते हैं फॉर n. You take n number of open and dense sets और दिखाएंगे आप उनका इंटरसेक्शन भी open and dense. You can do this by induction. तो ये आपके लिए मैं एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ. इसको ना पूरी वो डिटेल दे दीजिएगा, इसकी जस्टिफिकेशन इसके नीचे लिखिएगा. So this is done. अब हमें ये भी पता है कि finite intersection of open and dense sets is open and dense. ठीक. अब हमारी ना लालच बढ़ रही है यहाँ पर. हमने पहले देखा 2 के लिए ट्रू है. If you take 2 open and dense sets, their intersection is open and dense. फिर 3 के लिए भी then we हमने इसको फिर जनरलाइज किया. अब हम कह रहे हैं कि that finite intersection of open and dense sets is open and dense. अब क्वेश्चन है what about countably infinite intersection of open and dense sets? Is it open? Is it necessarily open? तो आप ऐसे कह भी नहीं सकते वहां पर, because countable if you have a countably infinite collection of open sets, their intersection need not be open. ठीक. तो ओपन तो आप वैसे भी नहीं कह सकते, बट क्वेश्चन है क्या वो डेंस होगा, मतलब ना दिस काउंटेबली इन्फिनिट
intersection of open-ended sets, can we expect that to be dense? The answer is no. इसके लिए मैं आपको एक काउंटर एग्जांपल दूंगा यहाँ. अब क्या करें? कंसिडर subspace Q with modulus of this metric space. ये जो metric space है, आपने इसकी ये वाली subspace को consider करना है. इसके बाद if Q equal R1 R2, चूंकि Q काउंटेबल है तो उसको आप इस तरह से, इसके एलिमेंट्स को इस तरह से आप एनुमरेट कर सकते हैं. R3 so on be an enumeration of Q, then for each n in the set of natural numbers, we define a sub n. A sub n क्या होगा? It will be defined as Q minus singleton R sub n. So what will be A1? an हासिल करने के लिए आपको Q से Rn निकालना है. So A1 हासिल करने के लिए आपको Q से R1 निकालना है. तो it will be R2, R3, R4, so on. This will be your A1. What will be E2? E2 will be R1, R2 बाहर जाएगा, so it will be then R3, then R4 and then so on. इसी तरह से A3 के लिए R3 बाहर जाएगा, so it will be R1, R2, R4 and so on. ठीक, इस तरह से ये सेट्स, ये जो सेट्स है ये इस तरह के सेट्स है. Full stop. Observe that अगर आप an को देखेंगे, it is Q minus singleton Rn, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सॉरी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ. देखिए, what is an basically? It is all the rational numbers except Rn. अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. This is minus infinity up to Rn open interval union Rn up to infinity intersected with Q. क्या ये सही है? आप पहले इसे देखिए. What is this? इसमें सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं एक्सेप्ट Rn, बिकॉज Rn पर ये ओपन है. इसमें भी और इसमें भी. एंड देन यू आर टेकिंग इंटरसेक्शन विद Q. यहाँ सारे रियल नंबर्स है, लेकिन जब आप लेते हैं इंटरसेक्शन विद Q तो आप खाली रैशनल नंबर्स आएंगे. So this is all the rational numbers except Rn, which is an. ठीक, और ये जो सेट आप यहाँ देख रहे हैं in the square bracket, this is open in the parent space. This is open in R with modulus. So therefore, from this one can easily see, from this it follows directly. इसमें देखना ही क्या है, it follows. From this it follows
दिस इज ट्रू, ये जो अब मैं कर रहा हूँ ना यहाँ ए एन के लिए, ये किसी भी एन के लिए किया जा सकता है. सो देयरफॉर दिस इज ट्रू फॉर एवरी एन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. और फिर आप ये लिखिए फ्रॉम this, sorry, from this it follows ANs are open in Q with mod. बताइए क्यों? What is the reason? How these ANs are open? This is किस चीज को हम इस्तेमाल यहाँ कर रहे हैं? To conclude the openness of ANs in this subspace. This is what? This is कुछ याद आ रहा है आपको? Principle of inheritance. It follows with because principle of inheritance says that parent space open intersected with underlying set of the subspace is basically subspace open. So ANs are open in the subspace. ठीक? Further, if O be a non-empty open set in the सर हमारी subspace. दूसरी क्लास है. अच्छा ठीक है, अब कितने हो गई स्टार्ट? जी सर, मतलब हमने ज्वाइन नहीं किया ना. लिंक उन्होंने भेजी आपको? सर वो मैम पहले कॉल करती हैं तो उन्होंने किया है, लेकिन मैं पिक नहीं कर पाई. अच्छा ये 2 लाइन्स था, इसको हम लिखते फिर आप जा सकते. ओके सर. If this O be non-empty and open in Q with usual metric, then again by this principle of inheritance, principle of inheritance क्या follow होगा? We can find an open set say E कहाँ in the parent space such that O will be E intersected with Q. Again principle of inheritance, because we know that subspace open sets are basically intersections of parent space open sets with the underlying set of the subspace. So O will be E intersected with Q, where E is some open set in the parent space. ठीक है? Now चूंकि O non-empty है तो E भी non-empty होना चाहिए. O is non-empty तो E भी non-empty ही होना चाहिए, because if E is empty then intersection will be empty, so O will be empty. ठीक है ना? लेकिन O is non-empty, so मतलब E भी non-empty ही होना चाहिए. Since O is non-empty, it follows E is non-empty and therefore, now what is this E? It's open in R
and it is non-empty. So therefore it must contain infinitely many rationals. आप ये easily देख सकते हैं. A non-empty open set of R with usual metric, it contains infinitely many rationals because it contains an interval, and therefore E contains infinitely many rational numbers. Full therefore अब अगर आप इसे देखेंगे an ये हो गया बस intersected with O. What's O? O is E intersected with Q. So this is an intersected with E intersected with Q, right? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, this is same as E intersected with, मैं ये और ये commute कर रहा हूँ, an intersected with Q. Now an is a subset of Q, so an intersected with Q will be an. So this is E intersected with an. ठीक, और मैं आपसे कह रहा हूँ this is non-empty. मुझे बताइए क्यों? इसका रीजन ये है बिकॉज an में बस एक रैशनल नंबर मिसिंग है, whereas जो E है it contains infinitely many rational numbers. an contains all the rational numbers except one. Rn को छोड़ के सारे rational numbers इसमें है, और E में infinitely many rational numbers है, so intersection has to be non-empty. ठीक है ना? So अगर आप सब समराइज, और ये ट्रू है फॉर एवरी n इन द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, चाहे कोई भी an आप ले, दिस विल बी ट्रू. अब अगर आप सब समराइज करेंगे क्या मिल रहा है आपको? बेसिकली आपको मिल रहा है कि दैट an intersects O, and what's O? O is non-empty and open. ठीक, और ये हमने ऐसे ही लिया था, was chosen arbitrarily in the subspace. So that means ans are also dense in, hence ans are dense in the subspace. ठीक, so they are open as well as dense. Open तो हमने पहले ही ऊपर देखा था by principle of inheritance. They are open. अब नीचे आप देख रहे हैं कि they are also dense. Now what about their intersection? Since intersection n runs from 1 to infinity an, अब में से मुझे कोई बता सकता है ये क्या होगा? इसके लिए मैं आपके लिए ये फिर से an लिख रहा हूँ. We know that a1 is r2, r3, r4, so on. a2 जो है it is r1, r2, oh sorry, r1, r3, r4, so on. a3 जो है वो ये है, it's r1, r2, r4, so on, and then so on. इसी तरह से ये सारे. अब बता सकते हैं आप में से कोई ये इंटरसेक्शन क्या होगा? It must be 5. इसका रीजन असल में ये है, मतलब इसको आप बहुत सारे तरीकों से देख सकते हैं. एक सिंपलेस्ट तरीका ये है, अगर आप a1 और a2 का इंटरसेक्शन लेते हैं, यहाँ आपको सारे ans का इंटरसेक्शन लेना है. अगर आप पहले दो ही का लेते हैं तो फिर क्या होता है? अगर आप देखेंगे, चूंकि r1 a1 में नहीं है, तो r1 इंटरसेक्शन में a1 और a2 का जो इंटरसेक्शन है उसमें r1 नहीं आएगा क्योंकि वो a1 में नहीं है. इसी तरह से चूंकि r2 जो है वो a2 में नहीं है, तो r2 भी इंटरसेक्शन में नहीं आएगा. सो दैट मीन्स इंटरसेक्शन में r1 और r2 नहीं आएंगे और बाकी सारे आएंगे. सो दैट मीन्स a1 इंटरसेक्टेड विद a2 इज r1 r2 बाहर जा रहा है, सो इट विल बी r3 r4 सो ऑन. सो कहने का मतलब ये है कि ये जो सेट था हमारा Q इक्वल टू R1, R2, R3 so on, जब आप पहले दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं इस सेट के पहले दो एलिमेंट्स बाहर हो जाते हैं. इसी तरह से अगर आप पहले तीन ans का इंटरसेक्शन लेंगे, दैट मींस अगर आप लेंगे a1 इंटरसेक्टेड a2 इंटरसेक्टेड a3,
यहाँ पहले 3 बाहर हो जाएंगे. इट विल बी R4, R5, R6 एंड सो ऑन. तो 3 का इंटरसेक्शन लेने से 3 RNs बाहर हो रहे हैं. पहले 3 RNs, पहले 3 ANs का इंटरसेक्शन लेने से पहले 3 RNs बाहर हो रहे हैं. अब यहाँ क्या कर रहे हैं आप सारे ANs का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, सो इट हैज टू बी 5. तो यहाँ बेसिकली सारे RNs बाहर हो जाएंगे. सो यहाँ से क्या फॉलो होता है? काउंटेबल इंटरसेक्शन, काउंटेबली इन्फिनिट इंटरसेक्शन, बिकॉज दिस इज काउंटेबली इन्फिनिट इंटरसेक्शन. सो काउंटेबली इन्फिनिट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन एंड डेंस सेट्स नीड नॉट बी डेंस. इसे आप लिखिए एज अ रिमार्क और आप फिर जा सकते हैं. काउंटेबली इन्फिनिट intersection of open and dense sets need not be dense. ठीक, तो अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है, वो ये है कि अंडर व्हाट कंडीशंस काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन एंड डेंस सेट्स इज डेंस, जो कि इन जनरल दिस नीड नॉट बी. अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशंस the countable intersection of open and dense sets is dense. The answer is you must be in a Baire space. ये बस वही पॉसिबल होता है. खाली Baire spaces में countable intersection of open and dense sets is dense. ये हम इंशाल्लाह अब कल देखेंगे. अब जाइए.